ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने लिक्विड स्टेट पढ़ा, बिहेवियर ऑफ द लिक्विड्स। ओके, हमने कहा कि लिक्विड्स बेसिकली लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर ऑन मूव, इसलिए हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। दे कैन फ्लो, इट मीन दे हैव द अट्रैक्टिव फोर्सेस which are not that strong enough like solids to hold them permanently at a place. So the particles are changing position with respect to each other. And some may gain energy from each other and keep on rather vaporizing. पर डिपेंड करता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इट मीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, तो उसका एवापोरेशन रेट हाई होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे कल हमने कहा था कि पेट्रोल कीप ऑन वेपराइजिंग। अब जस्ट लिड टाइट ना करें तो आपको व्हील पे बैठे स्मेल आना शुरू हो जाती है गाड़ी में, या कहीं खुला हो, इट मीन या परफ्यूम्स की, इट मीन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हर तरह के लिक्विड का आपने स्ट्रक्चर बना के, हमने कल देखा, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो डिवाइस करनी है कि विच काइंड ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स इट इज। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो एवापोरेशन रेट हाई होगा और वेपर प्रेशर हाई होगा, और वोलेटाइल में कंसीडर होगा नॉर्मल। सो evaporation rate is high for the liquids, like liquid C is vaporizing more. It means weak intermolecular forces. और जब आप किसी क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड को वेपराइज होने दे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैसेस वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज होने लगते हैं, बिकॉज कंडेंस हो जाना शुरू हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो ऑपरेशन कंडेंसेशन रेट जब इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाती है, और उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड की सरफेस पे, दैट इज द वेपर प्रेशर। ओके, सो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस हम गो थ्रू करेंगे। इस चैप्टर का बॉन्डिंग से बड़ा रिलेशन है, डेफिनेटली ये बॉन्डिंग का पार्ट 2 है, तो कोशिश करते हैं इसको क्लोज करने की। Bromine is a reddish brown liquid. Some liquid bromine is placed in a closed jar. The bromine starts to evaporate. Low boiling liquid होता है bromine. अब देखें ग्रुप 7 तो 17 फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, बट ब्रोमीन इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड। आपसे इवन ये भी पूछ सकता है कि फ्रॉम फ्लोरीन टू ब्रोमीन व्हेन वी मूव टू थर्ड पीरियड, थर्ड एलिमेंट, क्यों ये लिक्विड बन गया? आप कहेंगे all these group 17 particles, molecules, they are diatomic and they are simple molecules, non-polar, no dispersion of the cloud, and so it means they depend on id forces. और अगर id फोर्स पे डिपेंड करते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाती है जब प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो जाए। तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, so it means it has more positive and negative charges, more strength of instantaneous dipole and strength of induced dipole. And that is the reason bromine is a liquid. But it's a low boiling liquid, keep on vaporizing. When the bromine start to evaporate, the color of the vapor above the liquid bromine becomes darker and darker. After a time, bromine vapor does not get any darker. Use ideas about moving particles to explain this observation. So इनिशियली जो है ब्रोमीन चेंजिंग इनटू गैस, कंटिन्यूसली वेपर्स बन रहे हैं। क्लोज अगर आपने कर लिया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ ब्रोमीन लिक्विड पार्टिकल गोइंग इनटू द गैसियस मॉलिक्यूल्स and number of gaseous bromine particles coming back to the liquid, they almost levels each other, and that point is where diffusion has reached to the equilibrium, and we call it as the equilibrium position. No more color change is seen, it becomes uniform throughout. इसलिए कहते हैं diffusion is the continuous movement of particles. It's gradual mixing. Initially it starts from higher concentration to lower, but once the concentration become uniform, ऐसा नहीं कि particles रुक गए, they are moving, but they are moving at a constant speed. So that is basically the idea about this question. ठीक है ना? आपने इनको देखना है, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो आपने पूछना है। Then is the screen visible? Yes sir. Okay. अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट्स में आयनिक कंपाउंड्स हमने पहले पढ़ा बॉन्डिंग में।
ionic compounds are always solids. Reason: because in ionic compound, every particle is either a positive ion or a negative ion. It means attractive force is definite. They are not dependent on any intermolecular force because there is no molecule. They are not dependent on ID or its hydrogen bonding yet dipole forces because every particle is jam packed with other by electrostatic force of attraction. That is obvious between positive and negative ion. There should be an electrostatic force of attraction. So in ionic compounds, हमने पहले भी discuss किया bonding में, ionic compounds are positive and negative ions. They are stocked in very fine layers, and these layers are not 2D, rather these layers are 3D. And when they are grown up in 3D, it means they change to a crystalline structure. And each particle is attracted by many others, which we call coordination numbers. Like NaCl में, each positive ion is attracted by 6 negative ions. And each negative ion is attracted by 6 positive ions. Cube has 3 phases. So it has a coordination number. An ionic compound it is, and it is solid. But you know that ionic compound sodium chloride is not considered to be a very high class solid. इसलिए आप कहीं पे इससे कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं करते. ऐसा नहीं कि आप इसे सिरामिक्स बना लें, ओवन सेफ मटेरियल्स बना लें, लाइनिंग ऑफ किलिन्स बना लें, फर्नेसेस बना लें, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बना रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग इट. आपको पता है 800 पे मेल्ट कर जाएगा. Although 800 is very high, but it's not that high as compared to the other ionic compounds, which may have 2000 plus, some around 4000. तो रीजन क्या ionic compound lattices की? Because हमने डिस्कस किया था कि positive ion, if it is highly charged and small, then its charge is spread to a small area and it become very strong positive character, positive charge density. और anion भी अगर इसका छोटा हो और heavily charged हो, then they have a very strong attractive force. So the ionic lattice become very strong, like Mg2 plus very small, O2 minus small. Mg2 plus and O2 minus is a perfect example of a very solid, strong, high melting ionic lattice. Refractory material, fire resistant material. तो आप उसमें magnitude of charge को और cation और anion दोनों छोटे, heavily charged, charge density thick, attracting each other. Okay. In some cases, ionic compound हमने discuss किया था कि ionic compound may have a cation like aluminum 3 plus and anion like chloride ion. तो cation small और anion बड़ा हो जाए तो फिर cation anion के electronic cloud को snatch ही कर लेता है और covalent character ले आता है. So that actually makes them weak. In that case, that's a covalent lattice. So many crystals. Look at this shiny, sparkling sapphires, or rubies, or other crystals. They are basically super ionic compounds. But here, metallic solids, metals are definitely solids, with the exception of mercury. And why metals are solid? Always you will go for the bonding. जैसे ionic में bonding में गए थे, metals में भी आप bonding पे जाएंगे. And you will say that metal atoms are not atoms basically. Generally, when a metal is by its own, its last shell electrons are slipped out of the last shell. And they make a community around in specified shells. So they are called delocalized. Out of their locality को क्या कहते हैं? Delocalized. You are moving out of your town, delocalized. And these are the cations. So metal got a very unique bond. ऐसा नहीं कि एक metal दूसरी metal से कोई bond बना रही है. Normally a metal has a bond within itself. Because ionic bond is between a metal and a non-metal, preferably. Covalent bond is between a non-metal and a non-metal, preferably. But exceptions are there like metal, non-metal, aluminum chloride. लेकिन metallic bond is within a metal itself. Unique it is. Okay. And theory says that metal's cation are strongly attracted by its delocalized electrons. So electrostatic force of attraction between metal's cation and CF electron is responsible for holding this lattice. And just like ionic compound, this lattice also grows in 3D fashion, making a crystalline structure. And metal's crystalline structure generally
varies from ionic in the sense that it may have more layering in many cases, more thickness, more strength, higher density, so that make them a bit stronger. Unlike ionic compounds, that at some places they may have weak points, an ending sort, where sort of cleavage planes ban jate hain. And when you hit them through that point, they become brittle and they keep on breaking up. इसलिए आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज में कि कुछ मेसन्स होते हैं वो पत्थरों को तोड़ते रहते हैं by hitting them at a certain point. Even diamond can be broken at hitting at a certain point through its refractive index, through that particular cleavage plane जो naturally बन रहा होता है. But metals, some strong metals like iron, etc., may be very strong. And if you want to mold them up, you have to heat them extensively, almost close to their melting point. So they become red hot and particles start moving around a bit. And when you hit at that point, then they start slipping apart. तो लोहे को आपने देखा होगा गर्म करके फिर उसको मोल्ड करते हैं, फिर उसे मोल्ड करते हैं and it becomes malleable. And then you can stretch it into wires. You call it as ductile. You can mold it into different shapes. You call it as malleable. Okay. And pure metals are, comparatively, the word soft is used. Because when the metal is pure, it has only one kind of the atomic radii. So बीच में एक ही तरह की स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाती है. जब आप हिट करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बीच में से कि स्लिप आउट से होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के जैसे सामने आते हैं, they repel. So a certain continuous rhythmic systematic hitting will actually shape them up into a fine malleable thing जो आप बनाना चाहते हैं. And normally you heat them up first and then you actually do that. So they are easy to shape up if they are pure. But normally pure metals, as on their standard, they are soft, and you want to change them into something bit harder and shiny and corrosion resistant, तो फिर आप 2-3 metals को mix कर लेते हैं. Some less reactive and shiny metal like chromium and nickel, cobalt may be mixed. तो iron की ये जो resistance वाली rust वाली property है ये कम हो जाएगी. और स्मॉल इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर लेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और छोटी छोटी मेटल के एटम घुस जाएंगे. तो दे एक्चुअली व्हेन यू अप्लाई फोर्स दे पुश अगेंस्ट, लेयरिंग इज डिसरप्टेड, नॉन यूनिफॉर्म एटॉमिक रेडियाई आर देयर, नाउ एलॉय बिकम हार्डर. तो जितनी एलॉयज होती हैं दे आर हार्डर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ द अदर काइंड ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स यू आर मिक्सिंग इन. जैसे आयरन को, प्योर आयरन वेरी सॉफ्ट and very rare it is used. Like हम उसे simple जो iron कहते हैं, cast iron, that initially which is formed, wrought iron rather. तो wrought iron से just furniture वगैरह बनेंगे, they are not that strong. But when you change iron atoms में, you mix carbon in that, it becomes harder, like girders, big blocks, and it becomes hard steel. And when you mix some shiny and reflective materials like chromium and nickels and others, then it becomes stainless steel and become really strong, resistant to corrosion. All weaknesses overcome. हम metals को जैसे stainless steel बना के या steel बना के use करते हैं iron. इसी तरह aluminum को duralumin बना के use करते हैं. Brass is copper and tin. Bronze is copper and zinc. No, bronze is copper and tin. Brass is copper and zinc. And so many other kind of alloys are there, but most common is this duralumin and steel. Alloys actually overcome those properties. तो आपको किसी भी alloy का इन चीजों की बातें आए, तो I think आपकी बुक में बड़ा अच्छा करके लिखा हो alloys and their properties. Pure metals are sliding apart, but when you have alloy, non-uniform atoms get in between. They disrupt the layers, so they become harder. And hardness arises, strength arises. But at a very extreme situation, they may break up. इसीलिए कह सकते हैं इसी MCQ में कि आपने बहुत हार्ड कर दी है, strength है, but in extreme situation it may be a substance that is proven to be brittle. जैसे टाइटेनिक ब्रेक कर गया था instead of bending, पानी घुस गया था. Had it been the normal alloy, normal mild steel होता तो शायद bend करता.
Why are most metals strong but ionic solids are brittle? Most metals may have more thick layering, strong lattices, strong electrostatic force of attraction, higher densities. But ionic lattices are giant ionic lattices, but because of their crystalline structure and because of less packing and less layering, they may be brittle at points, at certain points. Why is alloy of copper and tin stronger than either copper or tin? Alone. जब कॉपर एंड टिन अलोन होंगे तो प्योर होगी तो एक जैसे एटम्स होंगे, एक जैसे एटम्स होंगे, फाइन लेयर्स होंगी, फाइन लेयर्स हैं तो इट मीन दे कैन स्लाइड अपार्ट. बट when you alloy them, then they become harder. Okay, so there may be question related to metals as well. Then comes थेरेटिकल सा है और आपको ये बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक में जाके हमें ये चीजें काम आएंगी. 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के और आगे A2 में कई चीजें ऐसी जो इस पे बेस करती हैं. अच्छा, देन कम्स, अब कोवलेंट पे आ गए हम. एंड कोवलेंट मीन व्हाट? सिंपल मोलिकुलर लैटिसेस. जब सिंपल मोलिकुलर लैटिस का वर्ड यूज हो रहा है तो इट मीन सिंपल कोवलेंट. The word simple mean their molecule ends up after 2 atoms, after 3 atoms, after 300 atoms, 3000 atoms even end up हो जाए, it mean it is a simple molecular lattice. And when it is simple molecular lattice, जैसे उसने आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है, तो आपसे पूछ सकता है, आप कहेंगे यार simple molecular lattice mean they are molecular. One molecule itself may be very strong. Itself phosphorus may have all the strong bonds with each other. Itself it may be strong, P4 रहता है. But in between one molecule and another molecule, there is no force, genuine bond. It depends on intermolecular force. But intermolecular force is not comparable as compared to a giant ionic lattice, as compared to a giant metallic lattice, or even giant covalent lattice हम पढ़ने जा रहे हैं. So simple molecular are weak. They have weak intermolecular forces. Second statement आपको mark दे देगी. They have weak intermolecular forces. So they are not that compact, they are not that rigid, they are not that strong. And फिर next कहेगा क्यों melting point low है या क्यों vaporize हो गया एकदम, क्यों गैस बन गई है sublime iodine. आप कहेंगे when it is heated, its weak intermolecular forces break apart so quickly. But when you talk about an ionic compound and its high melting point, आपकी statement कितनी change होती है? Giant ionic lattices, strong electrostatic forces of attraction, held in a 3D crystalline structure. Each particle tightly held by many attractive forces from the other. So when you apply heat, lots of energy is needed to break strong electrostatic forces of attraction, both in ionic, both in metals. ऐसा नहीं कि मेटल आप खाना पका रहे हैं तो मेटल पक जाए. देखें कभी किचन में जाके, जितना मर्जी आप भूल जाएं खाना जल जाएगा, मेटल को कुछ नहीं होता. But when you talk about simple molecular lattices, they are simple covalent molecules. Weak intermolecular forces are holding them up. There is no strong covalent bond in between. So when you apply force, what happens is that, when you apply heat, less heat energy needed to break them apart. अभी इनमें भी comparisons आ जाएंगे जो हमने पढ़े थ्रू आउट बॉन्डिंग करते हुए, कि आप टाइप देखेंगे कि क्या है. सपोज हमारे पास दिस इज आयोडीन. अब आयोडीन I2 होती है, तो नो डाउट फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड. आयोडीन में वेंडरवाल फोर्स ID फोर्स ज्यादा हो गई है बिकॉज प्रोटॉन नंबर 53 है इसका, बट स्टिल इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल. एंड व्हेन यू हीट, particles break apart so quickly it turns to gas directly. It is sublime. सर किसी से भी कंपैरिजन किसी के साथ आ जाए, लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, तो सल्फर में 8 एटम्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं. फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल P4 होता है. Okay, it is octaatomic. More number of sulfur atoms per molecule, more proton, more electron, dependent on only induced instantaneous dipole force. So at a particular instant, it has a strength of instantaneous dipole force larger than that of the P4 because it has less atoms. तो कंपैरिजन जब आ जाए सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो आप उसके नंबर ऑफ एटम्स पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे,
एक्सटेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल पे, एक्सटेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल पे डिपेंड करेंगे. इट्स MR इज लार्ज सल्फर, it has more atoms per molecule, it has more positive and negative charges, more strength of instantaneous dipole, and so the induced dipole. So it has a higher melting point as compared to phosphorus. फिर आप इस तरह के कंपैरिजन पे आ जाते हैं, फिर कहीं पे भी आ जाएगा. लेकिन तो आपके एक्सरसाइज में जरूर इस तरह के क्वेश्चन या पेपर्स में. कल देखा मैंने आपको जब गो थ्रू करवा रहा था, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स वर देयर जो हम लोगों ने की हुई थी पेपर्स में. That is about simple molecular lattices, simple compounds. Okay, why is aluminum with a steel core used for overhead? Because steel core provides the strength from inside, but aluminum is a very good electrical conductor. So that's why many aluminum car engine blocks are made from aluminum alloys rather than from steel. Aluminum makes them light. Aluminum is a better heat conductor. It has more delocalized electrons. Heat conductivity भी उसकी वजह से आती है. Okay. And aluminum is silvery shiny, resistant to heat, and may have a high heat capacity. So it's not getting hotter as compared to steel. Explain the difference in tensile strength, electrical conductivity, iron and sulfur. Comparison ही कोई नहीं है. Iron is a metal and it has a metallic bond. Giant ionic metallic lattice having positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. Fine layers. So it got the tensile strength. But sulfur is a poor, simple molecular solid, octaatomic. It is brittle. So sulfur is normally in powdered form, but iron is a metal. आपने इन क्वेश्चंस को वहां से भी इंप्रूव करना है जो मैंने आंसर्स भेजे हैं. And then come giant molecular structure, giant covalent structures. I mean too much covalent bonds. And if there are too much covalent bonds, nothing is more stronger than a covalent bond ever. So it is graphite. One layer is never ending from one end of the world to the other because the full stop contains trillions of atoms. Strong covalent bonds that make graphite a very high melting thing. But graphite molecular structure has one weakness, that is its advantage for use. That one layer is just lying at the other layer. In between, these dotted line shows a simple instantaneous dipole-dipole force. Non-polar large layer is attracted by other by a simple ID-ID force. There is the reason graphite layers are flaky. Graphite is soft. Graphite is flaky and soft, and layers keep on sliding on each other. For that reason, you use it as a graphite pencil. So when you write, basically, you are transforming these graphite layers onto your paper. Remember this thing. पूछे क्यों तो आप कहेंगे it's a macromolecule, no doubt. One layer is giant, never ending, but in between two layers there is hardly any strong bond. It's only a weak ID-ID force. So when you write, the layers slide apart. And for this reason, you use graphite as a lubricant friction reducer. In what? In heavy machines. Because engines में जब आप heavy engines में, very heavy engines of some heavy machine, like all those graders and excavators and other kind of the machines जो आप roads पे काम करते देखते, their engines are very heavy. Too much heat they produce. So graphite lubricants are used there to reduce friction. One reason is graphite sliding in slippery ability and slippery layers and flaky layers, they reduce the friction. And second reason is very important one, that graphite is a macromolecule. And when it is a macromolecule, it means it has a very high melting point. And even in engine's temperature, it is not denatured. It's not broken. मोबाइल ऑयल डालेंगे तो उड़ जाएगा, खाली वेपराइज हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा. जैसे हमारी गाड़ी में कुछ अरसे बाद मोबाइल ऑयल क्यों चेंज करवाते हैं? बिकॉज उसके लॉन्ग चेन्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के, आफ्टर सम डेज ऑफ हीटिंग, some certain mileage, those chains break up, they become simple molecules, attractive forces weakens up, so their sliding ability decreases. लेकिन यहाँ पे graphite lubricant, being a macromolecule, never get denatured at engine's temperature since it's a macromolecule. और एक और चीज देखें, उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई हुई, आप जानते हैं
Okay, in graphite, each carbon atom share its 3 electrons for bonding and leave 4th unbonded, delocalized, along its parallel p orbitals. And when it stays delocalized, it means at time you can use graphite as a conductor. तो आप लोग इलेक्ट्रोड के तौर पे इलेक्ट्रिकल सेल में ग्रेफाइट को यूज करते हैं. ठीक. और एक और gem of a material and gem itself, no doubt, strongest of thing nature has created. Why it is strong? Because unlike graphite, its 4th electron is not free. भी अच्छा वर्ड नहीं है, बिकॉज वो भी एक पैरेलल पी शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, delocalized, unbonded. But in diamond, this is not the case. All the way NC valency 4 electrons of carbon are busy in bonding, and there is a never-ending, unending, never-ending, continuous, extensive covalent network. And when each carbon atom is bonded with 4, unlike graphite, which got a hexagonal layers sliding at each other and flaky, diamond is not the case. Diamond में हर कार्बन के अराउंड जब 4 होते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से शेप्स में जानते हैं कि when there are 4 around anything, if the central atom has 4 electronic clouds, they are spread apart by angle of 109.5. And when it's 109.5, the symmetry that is the most stable symmetry of the world, that is, we call it as tetrahedral symmetry. So diamond के लिए आपके पास ये wording है. It's each atom is arranged in a tetrahedral symmetry. Carbon is at the center of tetrahedron. Strong covalent bonds, no loopholes, no free electrons. So that makes it as the hardest of thing nature has made. It is used as an abrasive. एक word ये abrasive use होता है. Abrasive का मतलब ही ये है कि it basically is used to polish the surfaces, to cut the surfaces, hard surfaces, to cut other glass. So diamond studded saws यूज होते हैं, जो किसी भी जगह कोई रफ चीज है, जैसे गाड़ियों बनती हैं तो उनकी surfaces, when they are actually used by the diamond abrasive saw, diamond studded saw, diamond जब move करता है उनके ऊपर रंधा type, then actually they get so flattened up, they become so soft from the surface, same surface बन जाती है उन hard चीजों की, और फिर उनको पेंट किया जाता है या वार्निश या पॉलिश लगाई जाती है. So diamond has this abrasive ability, and diamond has this strength, this hardness, this rigidity and compactness. The diamond is used at the tips of the drill machines. So the drill goes down deeper and deeper and cut the rocks and bring oil for us and water, but nothing happened to the drill thanks to this hardness naturally occurring. So anything like graphite, कोई भी material आपको देगा, ऐसा नहीं कि graphite दे. Either you compare it with graphite, या तो graphite की तरह का होगा, or it may be like graphite की तरह होगा तो सारी कहानी आप graphite वाली बताएंगे, slidey and flaky and hexagonal layers and conductor. Diamond की तरह का होगा like quartz. ये देखिए सैंड में वो चमकता हुआ शीशा, शीशा तो खैर बन के होगा, but it is basically silicon oxide. Now it is just like diamond, because silicon is group 4 member, diamond is carbon basically. Carbon is also group 4, but carbon से नीचे एक step नीचे है तो silicon होता है. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. It has the 4 valency. But this time silicon's 4 valency is taken up by 4 oxygen atoms. Oxygen got 2 valency. So each oxygen atom is bonded with 2 silicons. But each silicon is bonded with 4 oxygens. This is important point. कभी पूछता है वो, तो आप group number से देख के बता दो. That makes silicon as tetrahedral, silicon oxide as tetrahedral macromolecule with an empirical formula of SiO2. You call it as sand, the quartz. Strong macromolecule, very high melting and boiling point. In order to melt it, you need to break some covalent bond, just like diamond. Diamond melts at 3500. You need to break some covalent bonds. It's not a simple molecular lattice that you heat and intermolecular force breaks apart. There's no intermolecular force.
इट्स अ कंटिन्यूअस जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। ओके, आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज को कहाँ यूज करते हैं? इसको मिक्स करके सैंड को और कैल्शियम ऑक्साइड को हम सीमेंट बनाते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बनता है, स्लैग जो है ब्लास्ट फर्नेस में ऑटोमेटिकली बनता है, एंड फिर हम इसे ग्लास वगैरह बनाने में और सिरामिक बनाने में, हाई क्वालिटी सिरामिक्स, अच्छा वाला शीशा, क्वालिटी स्टफ। उसमें और चीजें फ्लड फ्लिंट्स पर माइका, कुछ कायोलिन, चाइना क्ले, क्या कुछ नहीं यूज होता, बट सिलिकॉन ऑक्साइड हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड, that gives it the perfect strength. Non-conductor it is just like diamond. All electrons are busy in bonding. ये कहानी उन्होंने पूछी होंगी. Explain the following properties of silicon oxide by referring to the structure. High melting point, need to break some covalent bond to melt it. Does not conduct electricity, has all electrons busy in bonding. Crystalline solid because the lattice of silicon dioxide grows in a tetrahedral fashion where each atom is bonded with four others. That gives it a very hard crystalline structure. Hardness में भी यही बात बताएंगे. It's a macromolecule, giant covalent structure, continuous covalent bond that makes it very hard. ठीक, तो आपने ये वाला टेबल जरूर फिल करना है जहाँ वो बता रहा है कि टू एग्जांपल्स ऑफ जायंट आयनिक, मतलब सोडियम क्लोराइड MgO, giant molecular like silicon oxide, silicon carbide, boron nitride, graphite, metallic like magnesium, copper, simple molecular like iodine. So particles present, giant ionic, sodium ion and chloride ion, क्या कहते हैं, positive ion and negative ion. Giant molecular, it means atoms present, molecules, giant molecules. Metallic, positive ions surrounded by sea of electrons. Simple molecular, simple molecules. फिर फोर्सेस क्या रखती हैं उनको, हार्डनेस किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी. डू कंप्लीट दीज अबाउट दीज. ओके, ये आपने करना है खुद इस डिस्कशन. मेल्टिंग पॉइंट को देख के अंदाजा लगा लेना है कि वो सिंपल मोलिकुलर है, जायंट आयनिक है, कोवलेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख. Because giant ionic lattices, when molten or aqueous, their ions are free. They'll become conductors. But normally in solid form, they'll not. Okay. अच्छा, this is something जो आपने पहले नहीं, ये सारी बातें जो हमने की ये पहले सारी आपने सुनी, बस आपने उनको एक गो थ्रू करना है, पेन डाउन करना है, अपना नॉलेज पाइल अप करना है. क्वेश्चन से होगा, इस रट्टे से नहीं होगा, इस डिस्कशन से नहीं होगा. तो आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने हैं. कल हम ये नया सा, आपके लिए नया है टॉपिक, ये करेंगे. Meanwhile, you have time. This seems, लगेगा कि ये रेपिटेशन है, बट स्काई इज द लिमिट टू प्रैक्टिस फॉर ए लेवल्स. आपने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करने हैं, बेशक आपके पास बुक है और आप लेड पेंसिल से कर रहे हो. तो कल हम इंशाल्लाह मैक्रोमोलिक्यूल्स, फुलरेंस पे, कार्बन नैनोट्यूब्स पे, ग्रेफाइट पे, सॉरी ग्रेफीन पे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. नॉर्मली क्लास में मैं असाइनमेंट बनाता हूँ, देता हूँ तो बच्चों को कुछ बड़ी फाइन असाइनमेंट्स मेरे पास पड़ी, आई मे शेयर विद यू. अल्लाह हाफिज क्लास.